So, okay, so today is our class 12. So let us start our question with the problem. So in this question, it has said that design the following joints using ordinary black bolts between two plates of width 200 millimeter and thickness 10 millimeter and 18 millimeter respectively to transmit a factor load of 150 kilometer. Okay. So after reading any question, try to imagine that question in your mind. Think what is question asking for. Here the question is given, you have to design a joint. Okay, so you have to design it in your own way with the help of IS code. So IS code has given some limitation. We cannot just take any number of spacing or any number of pitch distance, right? So we have to follow that specification and then we have to design it. Okay, so here the specifications or the things which have been provided in the question, that you have to design with two plates. Okay, two plate is given, you have to make a joint, you have to make this two plate a joint. So the specification of the two plates are given here. See, the width is 200 and the thickness is 10, and other plates width is similar and the thickness is 18. Okay, and these plates have to carry a transmit factor load of 150 kilonewton. Means you have to design these connections such a way that these plate can be able to transmit these amount of load. So here, say this is the plate, this is one plate, and this is another plate. Okay, and the bottom part is just behind this plate, so I am showing it with a dotted line. So now the width is 200. This width will be similar for both the plate, and the thickness, the corresponding thickness is different. So the thickness of this plate might be 10. Okay, and the bottom plate might be 18 millimeter of thickness. So you have to make a connection. You have to design this joint, or you have to put a bolt in such a way that it can transmit a load of a factor load of 150 kilonewton. Okay, so after reading this question, you have to be able to understand or picturize this thing in your mind. You have to design this connection. Okay, so here the rest question which has been given. So you have to design this as you have to design as a lap joint, as a single cover butt joint with cover plate of 8 millimeter, and double cover butt joint with 8 millimeter cover plates. So these are three questions, or these three specification have been given, that you have to design this joint first as a lap joint, second as a single cover butt joint with cover plate specification given, and double cover butt joint. I have shown you these diagrams. What do you mean by single cover butt joint? What do you mean by double cover butt joint? Isn't it? So please go through those PDF slide. You will understand that very easily. Okay. So now let us start our problem. So these are our questions. Sorry. This part is the question part. Okay. Now, sorry, up to this. Use plates made of Fe410 grade. So the ultimate tensile stress of plate has been given Fe410 410.
mean that the ferrous ultimate tensile stress is 410 megapascal or Newton per millimeter square, and 16 millimeter dia bolt of grade 4.6, and the bolt diameter has also given here. Okay, so with the grade of 4.6. Okay, let us start from the solution. So we will first solve as a lap joint, this connection to be lap joint. Okay, so now the nominal diameter of bolt is given 16 millimeter. Let me zoom it. Okay, nominal diameter is given 16 millimeter. So nominal diameter mean what? The D mean if this is the bolt, so this is the nominal part. Okay, the nominal diameter. So now this is given 16 millimeter. Now diameter, what will be the diameter of hole? So as I have just okay, so here see in table 19. This has been given in clause 10.2.1. So here in the clause, when the nominal size of fastener diameter is given in this column and the corresponding clearance has been given in this column. So what was our nominal diameter in question? Anyone? What was our nominal diameter? Exactly. Why পাচ্ছ কেন? 16, exactly. So here see, in second row it is given the nominal size of fastener. In between from 16 to 22, you have to consider the standard clearance to be 2, right? So here similarly we will just consider 16 plus 2. So the reference is taken from table 19 from IS 800 2007. Okay, so our diameter of bolt is this, and the hole which we have to make over this plate should be 18 millimeter. Okay. Now for Fe410 grade of steel, Fu is 410 megapascal, what I have said. And the partial safety factor for bolt, gamma MB is 1.25. So again, I have also mentioned this this is provided in the table 5. Please just go through that gamma MB. So why am I considering these terms? D, D naught, FUB, FU, gamma MB. Why we are taking this? Because we will be going to need these terminology when we will solve the bearing strength and the shearing strength of the bolt. That is why we are just collecting all these data previously from the IS code. Okay, now see the bolts will be in single shear. So why? How can you just presume that it will be in single shear? Why not in double shear? Because see, this was the joint, right? So if I just draw it from this side, okay. So this is the side view I'm showing. So the bolts will be somewhat in this way, isn't it? So see, here the bolt is only having a one shear plane provided by these plates, isn't it? That is why the bolt will only have a single shear in that case, because the bolt will be lying in between these two plates, and this two plate will create one shear plane. That is why this will be the bolt will be in single shear. So I have said earlier here. So here that, let me just erase it. See,
say if this is the 18 millimeter thickness plate, okay, and this is the 10 millimeter thickness plate. Okay, so now the bolt, when we are injecting that through the hole, so see, the maximum part will be occupied by the shank of the bolt. So it may, so the shear plane may shift just below, or it may just go below to the threaded part, right? So if the threaded part starts from here, basically what happens, the threaded part starts, let me just go see this picture. See, the threaded part already started, or the threaded part has been spreaded to the maximum part of this bolt, right? So we will assume that as if one plate will lie upon the thread. And this is basically a general scenario, that a shear plane lies between the threaded part, okay? So here, that is why NN is considered to be 1, NS is considered to be 0. So is there any problem just observing on this grade 4.6? So in previous class I have told that 4.6 grade mean, this mean that 4 into 100 times mean 400 megapascal. Just a minute. 400 megapascal will be the ultimate tensile strength of bolt, and this 400 into the rest of 0.6. This rest of 0.6, 400 into 0.6 will be 240, right? 240 megapascal. So this will be our yield stress of the bolt. So from this 4.6, you can get the value of the ultimate tensile strength of bolt. Say if this 4.6 was designated as 5.2, say I am just considering. So what will be the ultimate tensile strength of bolt? It will be 5 into 100, 500, and the yield stress will be 500 into 2, 100 megapascal. Okay, clear? Raka? Yes, ma'am. Okay. So it has not given in IS code. You have to calculate this from this bolt rate given. It will be given in the question. Just okay. So now we can easily calculate the area of the bolt. How? We have given here, we have provided with the diameter 16 millimeter, right? So pi by 4 into d square. Do that, you will get this. So here there is one, see, if you just if you have calculator along with you, you just calculate it. If you put the value of 16 in the place of d, you will get 201 millimeter square. But see, here this has been given 157 millimeter square because we are considering the net shear area. So मैंने पहले ही कहा था कि नेट मतलब क्या, घटाया हुआ चीज रहेगा. देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, let me go into this diagram. Here see, in the threaded part the area has been reduced from with respect to its shank part. बिकॉज यहाँ पे जो ये बोल्ट लगाने के लिए जो थ्रेडिंग किया गया है, यहाँ पे से तो एरिया थोड़ा श्रेड हुआ है, तो यहाँ से एरिया घटा है, इसीलिए इसका होगा हमारा नेट एरिया. अब कितना घटा है, हम कितना रिड्यूस्ड एरिया लेंगे शैंक एरिया से? हम लेंगे 0.78 इंटू द एरिया ऑफ द शैंक पार्ट, मतलब कि 78% लेंगे, मतलब 22% रिड्यूस करेंगे इसके ओरिजिनल एरिया ऑफ डायमीटर से. ओके, तो अब देखो ये तो हमारा आया था 201,
तो इससे आप 0.78 मल्टीप्लाई करो. टेल मी हाउ मच वैल्यू इज 157.24. Okay, approximately 168.82 is showing in my calculator, whatever. So in this way you have to calculate the net shear area. So the reduced part will be 0.78. You have to multiply with 0.78, or you can state it as 78 over 100. मतलब कि हम 100 अमाउंट ऑफ एरिया के रिस्पेक्ट में ओनली 78 पार्ट एरिया का ही ले रहे हैं. Baki 22 part we are reducing. So this will be our net shear area, because the shear plane will lie upon the thread part. Okay. So this is the way you have to calculate A and B. So what was our A and B here? Let us just see. A and B is the net shear area of the bolt at threads may be taken as the area corresponding to the root diameter at the thread. Okay, so A and B is the area, net area, shear area of the bolt at threads. And what is ASB? ASB is the nominal plane shank area. Mean ASB will be our 201 only, because the shank part, see, shank part, there is no reduced area. So this will be our pi by 4 into d square. D is the diameter of the bolt, 16 here. So it will be our 201 only. Okay. So now let us come to the formula design shear strength per bolt. See here, this is the formula. So I am just showing you with respect to the IS code. See what happens. मैं पहले कुछ प्रॉब्लम में ये कॉरेस्पॉन्डिंग वे में IS कोड का जो फॉर्मूला है उसको दिखाऊंगी, पर after process, after just showing you numerous numerical problem, I will not go through this IS code. Okay, so I will presume that you have understood all the clauses and the pages and the formulas. Okay, तो मैं पहले कुछ प्रॉब्लम के लिए ही ये साथ में मैं IS कोड का फॉर्मूला भी शो करूंगी. Okay, so here this is the formula which is given in 10.3.3 and the page number is 75. Okay, so now put all the values. See here it is FUB. B यहाँ पे B है, मतलब ही है कि ये बोल्ट का. Okay, just remember this is the ultimate tensile stress of bolt, FUB, and it is divided by root over 3 into gamma mb nn into anb plus ns into asb. अब यहाँ पे बोल्ट का जो वैल्यू आया था वो यहाँ पे पुट करूंगी. तो ये मेगा पास्कल में है, मुझे ये किलो न्यूटन में कन्वर्ट करना है. सो I here see it has been divided by 1000, mean 10 to the power minus 3. It has been divided just in order to get into kilonewton, because this value is in megapascal, and what is megapascal? This is Newton. So we have to convert it in kilonewton. So in order to get in kilonewton, we have to divide this with 1000. That is why this has been put here. Divided by root over 3 into gamma mb is given 1.25 in table 5. Please just go through this IS code. Here, let me just get into that. See. Now see net area, because see the net shear plane is, how many shear plane is lying in between the bolt here. See how many shear, no, let's just not show you this diagram. Okay, let me just draw it, because in previous plane it was, so here it was the plate, so this is the bolt part, and shank part has been started from here, right?
So here the shank part is taking the shear plane. तो हम यहाँ पे शैंक पार्ट हमारा शियर प्लेन को ले रहा है, मतलब कि यहाँ से जो 150 किलो न्यूटन का फैक्टर किलो न्यूटन का जो फोर्स ट्रांसमिट होने वाला है ना, तो वो इस थ्रेडेड पार्ट से जाएगा, क्योंकि ये थ्रेडेड पार्ट में ही इस प्लेट का जंक्शन लाई कर रहा है, उस जंक्शन में ही शियर प्लेन क्रिएट होता है। तो ये जंक्शन कितना हमारा बोल्ट कितना प्लेन आ रहा है, वन प्लेन ओनली, सी वन प्लेन, सो हियर इट इज वन इनटू, अब थ्रेडेड पार्ट का तो रिड्यूस्ड एरिया है, वो जो हम कैलकुलेट किए थे 157 प्लस 0, व्हाई इट इज 0, बिकॉज NS इज 0, NS, व्हाई NS इज 0। अब देखो ये NS क्या है, ये शैंक पार्ट में रहेगा, तो शैंक पार्ट में क्या कोई शियर प्लेन है, शैंक पार्ट में तो कोई शियर प्लेन नहीं है, इसीलिए ये NS इक्वल टू 0 होगा, और ये 0 ASB के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये 0 ही रह जाएगा। क्लियर? So now just calculate all these values, along with this you will get 29 kilonewton. Okay, so just calculate it if you want to, you will get approximately 29 kilonewton. मतलब कि हमारा जो shear capacity of bolt है, shear capacity of bolt कैसे पता लगा, जो बोल्ट का डायमीटर 16 है और उसका ग्रेड है 4.6, बोल्ट का ग्रेड है 4.6, तो उसका हमारा शियर स्ट्रेंथ निकला 29 किलोन्यूटन। ओके, अब ये तो है डिजाइन शियर स्ट्रेंथ पर बोल्ट। अब ये एक एक बोल्ट का शियर स्ट्रेंथ है, ये जब हम ऊपर से देखेंगे ये कनेक्शन तो एक बोल्टिंग से नहीं होगा, ये और 2 या 3 बोल्ट हम ऐसे इसको कनेक्ट करेंगे, तो ये एक बोल्ट का ही शेयरिंग स्ट्रेंथ अभी तक 29 निकला है। ओके, नाउ अब देखो हमको मिनिमम पिच कैलकुलेट करना है, बिकॉज इन ऑर्डर टू कैलकुलेट, सी इन ऑर्डर टू कैलकुलेट the bearing capacity of bolt, see what was our formula, this was the formula 2.5 into kb into d into t into fu। अब kb का जो वैल्यू था, kb जैसे हमको निकालना है, उसमें देखो यहाँ पे e आ रहा है, t आ रहा है, तो e और t क्या है, these are the end and pitch distance of fastener, इसीलिए हमको इस फॉर्मूला में end and pitch distance निकालना पड़ेगा। ओके, सो नाउ that is why we are just getting this value previously। now from where we can get this minimum pitch formula which is 2.5d, मतलब कि d का जो उसका 2.5 टाइम्स हमको मिनिमम पिच लेना पड़ेगा, ये दिया है क्लॉज नंबर 10.2.2। See, this is the 10.2.2 clause, here minimum spacing given, the distance between center of fasteners shall not be less than 2.5 times the nominal diameter। distance between center of fasteners मतलब क्या है, वो तो pitch distance ही है, देखो यहाँ पे पिच क्या था, पिच तो ये डिस्टेंस था ना, तो ये क्या डिस्टेंस है हमारे एक फास्टेनर से दूसरे फास्टेनर का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, तो ये हमको ये क्लॉज से मिल जाता है। ओके, सो नाउ दिस विल बी p equal to 2.5 d, so d we will put the value, we have got that 40 millimeter will be the minimum pitch distance, मतलब कि हमको एक फास्टेनर से दूसरे फास्टेनर का जो गैप रखना है वो मिनिमम 40 होगा, 40 मिलीमीटर ही होगा। Okay, now we have to calculate the minimum end distance, so this has also been given in the IS code which is in clause 10.2.4.2। okay, so let us get into that 10.2.4.2, where is that, yeah, see here it is given, the minimum edge and end distance from the center of any hole to the nearest edge
of a plate shall not be less than 1.7 times the hole diameter in the case of sheared or hand flame cuttage and 1.5 times the hole diameter in the case of rolled machine flame cut. मतलब कि जब ये sheared और hand flame cut edge से बनाया जाएगा तो हमको 1.7 into D करना पड़ेगा, और जब ये केस रहेगा रोल्ड मशीन फ्लेम कट के कॉरेस्पॉन्डिंग तो हमको ये 1.5 टाइम्स इनटू डी करना पड़ेगा. इसीलिए दैट इज व्हाई सी हियर इट हैज बीन मल्टीप्लाइड विथ, see here it is given whole diameter, okay, that is why we have to multiply with d naught, d0, okay. So d naught for rolled edge and 1.5 for rolled edge and 1.7 for hand flame cut. So we have multiplied with both of that. So हमारा जो diameter का होल था वो क्या 16 plus 2 18 था. So after multiplying this we will get our minimum end distance to be 27 kb. See kb, what was our kb? The first formula was E divided by 3 into D naught. Mean how much is our E here? So here see E has been considered. So this is E has been considered for hand flame cuttage. Okay, it has been considered hand flame cuttage. So you can consider this, just mention it that you are considering this one. Okay, so now if you would have considered this one, then mention it also. So now because you are doing design, तुम लोग डिजाइन कर रहे हो, तो जो स्पेसिफिकेशन तुम कंसीडर करोगे प्लीज मेंशन इट, as per that you can design it. But in here this part this formula has been considered. Okay, तो मैं इसके ही मतलब मैं इसको ही फॉलो कर रही हूँ. See here it was 30.6. अब 30.6 millimeter लेना in the field is very difficult. तो इसको हम approximately 31 millimeter ही consider कर लेते हैं, ठीक है. तो अब ज्यादा नहीं ले सकते क्योंकि minimum end distance है. तो see here E divided by 3, what was our formula? E divided by 3 into D naught. So E is 31 divided by 3 into D naught is 16 plus 2 18. So we will get some amount. अच्छा, जिसके पास कैलकुलेटर है इसका कैलकुलेशन थोड़ा कर दो, करके बताओ. 31 divided by 3 into 18. Ma'am, 0.574. Okay. Okay. 0.574. Next is P divided by 3D naught. अब P क्या है हमारा 50. हम see here minimum end distance और minimum pitch, ये सब वैल्यूज आया, मतलब कि ये मिनिमम है, इससे ज्यादा मिनिमम तुम नहीं ले सकते हो एज पर आईएस कोड. इससे थोड़ा ज्यादा ले सकते हो, तो ये 40 के जगह पे 50 लिया गया है. ओके, सो अब ये डिजाइन कर रहे हो तो तुम 50 ले ही सकते हो. तो अब P के जगह पे 50 डिवाइडेड बाई 3 इंटू डी नॉट, इसका वैल्यू क्या आ रहा है? -0.25 है. -0.25 इसका क्या आएगा बताओ, टेल मी. $0.67. Okay, 0.67. वेल, अब नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है? FUB by FU, मतलब कि बोल्ट के अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस के साथ प्लेट का अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस को हमको निकालना है, इसका वैल्यू. तो ये क्या होगा? बोल्ट का 400 है, FUB is 400 and FU is 410. So divide it 400 by 410. 0.97. 0.97. Okay, and the last is 1. Now ये जो चारों फॉर्मूला है, इसमें से हमें सबसे स्मॉलर जो वैल्यू है वो लेना है. तो इसमें सबसे स्मॉलर वैल्यू क्या है? ये है 0.574, जो कि हमको इस फॉर्मूला से आया है.
That is why see KB has considered to be 0.57. So for this formula we have evaluated. हमको मिल गया है. Next is D. So what is D? D is the diameter of the bolt. So 2.5 into 0.57 into 16 D हमको मिल गया into T. अब T कौन सा लेंगे भाई? T will be considered to be the minimum thickness of the plate. ये जो दोनों प्लेट का थिकनेस दिया गया है उसमें से हमको जो प्लेट का थिकनेस सबसे मिनिमम है उसको ही लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं मिनिमम थिकनेस प्लेट के कॉरेस्पॉन्डिंग डिजाइन करके पास हो जाती हूँ तो वो मोटा वाला जो थिकनेस का प्लेट है उसमें तो पास हो ही जाएगा ये जो कनेक्शन है, isn't it? That is why we will take the minimum thickness. See, here it is given the summation of the thickness of, here it has been just you will get confused if you just see that. So let just remember, you have to consider the minimum thickness of the plate here into Fu, the ultimate tensile strength of the plate. Okay, this and kilonewton में convert करना है तो divided by 1000 divided by gamma mb. यहाँ पे B ये शिफ्ट हो गया है, this will be gamma mb. Okay, this is 1.25. अब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये हमारा वैल्यू निकलेगा 74.78. थोड़ा तुम लोग वेरीफाई कर लेना ये वैल्यू आ रहा है कि नहीं, तो अप्रोक्सीमेटली I believe that this answer would come. Okay, now see, therefore bolt value is 29. अच्छा, अब ये दोनों जो इसका एग्जाम है, हमने बोल्ट का जो दो एग्जाम है, वन एग्जाम है कि शेयर स्ट्रेंथ में वो पास मतलब शेयर स्ट्रेंथ में उसका क्या रिजल्ट आता है और बियरिंग स्ट्रेंथ में उसका क्या रिजल्ट आता है. तो इस दोनों एग्जामिनेशन में हम क्या डिजाइन कर रहे हैं ना, हम उस स्टूडेंट मतलब बोल्ट को अगर स्टूडेंट कंसीडर करेंगे, इफ आई कंसीडर अ बोल्ट टू बी अ स्टूडेंट एज अ टीचर, व्हाट विल आई डू? आई विल गो फॉर द वीकेस्ट सब्जेक्ट. जो सब्जेक्ट में 4 मार्क्स आएगा स्टूडेंट का, मैं उस वीक सब्जेक्ट को कंसीडर करूंगी ताकि उसका बेटर इंप्रूव कर सकूं, isn't it? So अब shear strength में इसका जो strength है वो कम आया है with respect to the bearing strength. So here we can see that in bearing strength, the bearing strength of the bolt is more than the shearing strength of the bolt. That is why we will go to the weakest. We will consider this value while designing. तो अगर मैं ये जो 4 सब्जेक्ट है बोल्ट का, इस 4 सब्जेक्ट को मैं अगर पास करवा दूं अच्छे तरीके से, तो ये तो इस सब्जेक्ट में पास है, ये तो ज्यादा मार्क्स ला ही रहा है ये बोल्ट बियरिंग स्ट्रेंथ में, isn't it? So that is why we will consider the bolt value to be 29. This is the logic behind that. Okay. Now number of bolts required. अब कितना सारा बोल्ट हमको लगेगा, तो अब हमको शेयरिंग स्ट्रेंथ क्या, देखो यहाँ पे और एक लॉजिक मैं जो बताना चाहूंगी. सी, बियरिंग स्ट्रेंथ में हमारा क्या आ रहा है 78 किलो न्यूटन अप्रोक्सीमेट, एंड शेयरिंग स्ट्रेंथ में कितना आ रहा है 29 किलो न्यूटन अप्रोक्सीमेट. अब क्या ये 78 किलो न्यूटन तो बोल्ट का जो ये तो ज्यादा है, पर क्या अगर ये शेयरिंग में फेल होने का चांस सबसे ज्यादा है जो कि मैं अभी बताई, तो अब ये जो 150 किलो न्यूटन का जो लोड ट्रांसमिट होगा, एक्सटर्नल जो फोर्स आएगा, ये जब ट्रांसमिट होना शुरू होगा तो ये सबसे वीकेस्ट फोर्स ऑफ द बोल्ट को पकड़ेगा, तो ये फोर्स के वजह से ये बोल्ट शेयरिंग में ही फेल होना चाहेगा, isn't it? सो हमको इसीलिए इसी वैल्यू से डिजाइन करना चाहिए. तो अब देखो ये तो पर बोल्ट का शेयरिंग स्ट्रेंथ ये है, तो हमें कितना सारा बोल्ट देना पड़ेगा, तो हमारा जो लोड ट्रांसमिट हो रहा है वो क्या है 150 किलो न्यूटन, और हमारा जो इंडिविजुअल बोल्ट का स्ट्रेंथ हम कंसीडर कर रहे हैं वो कितना है 29. तो हमको नंबर ऑफ बोल्ट कितना मिलेगा, कितना लेना चाहिए, बोलो एनीवन? इसको मैं और एक सिंपल एग्जांपल से समझाती हूँ. अगर इफ
one bolt has the capacity for shearing strength to be 29. Okay, तो 150 एक्चुअली ये थोड़ा उल्टा कर दिया, सॉरी. If 29, see, 29 kilonewton of force, shearing force capacity is taken by one bolt, then how much of bolt is required to take the force of 150 kilonewton? Have you got me? अगर एक बोल्ट 29 किलो न्यूटन ले सकता है तो 150 किलो न्यूटन कितना बोल्ट ले सकता है? ये डिवाइडेड बाय 29 कर देते हैं तो कितना आएगा? कैलकुलेट करो. 5.1. 5.1. अब ये 5.1 नाम का तो कोई बोल्ट का नंबर हम नहीं ले सकते. 5.1 क्या नंबरिंग हुआ? तो इसीलिए दैट इज व्हाई सी ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये आया है. तो प्रोवाइड 6 बोल्ट फॉर सेफ फॉर. अब एक्स्ट्रा अगर एक बोल्ट ले लेंगे तो फॉर सेफ्टी पर्पस वो तो अलाउ हो ही जाएगा, isn't it? So we can arrange the bolt in 2 lines just because we are designing, right? तो हम कैसे भी डिजाइन कर सकते हैं इसको. तो 6 बोल्ट लेंगे तो 6 बोल्ट अगर सी इस पे अगर 6 बोल्ट ऐसे ही मतलब कॉन्जिक्यूटिवली डालेंगे ऐसे 1 2 3 4 5 6 तो क्या होगा? यहाँ पे हमारा जो ये डिस्टेंस है ये मिनिमम डिस्टेंस तो हम क्या वायलेट कर देंगे ना जो हमारा आईएस कोड में दिया गया है, क्योंकि स्पेस बहुत ही घट जाएगा. तो हम और क्या मतलब उपाय निकाल सकते हैं? तो इसको हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं 3-3 ये दोनों रो में 3-3 बोल्ट करके दोनों रो में कर दिए. अब देखो हमारा जो एंड डिस्टेंस, आवर एंड डिस्टेंस वाज 31 मिलीमीटर. तो ये हमारा सेंटर फ्रॉम द बोल्ट ये 31, यहां से भी 31. ओके, और ये हमारा पिच डिस्टेंस क्या आया था? 50. सो जस्ट फॉलोइंग ऑल दीज instruction or the specification given by IS code, we can design this bolting arrangement in this way. तो इसका width था 200 मिलीमीटर. देखो ऊपर का thickness ये 18, the bottom plate thickness is 10 and the direction of load is this. So इसको तुम्हें draw करना है. अब देखो ये जो गैप रह जाएगा बीच का ये 200 माइनस 31 करोगे तो ये वाला डिस्टेंस निकल जाएगा 138 मिलीमीटर. ओके, दैट यू कैन कैलकुलेट. तो ये ड्रॉ करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम जब डिजाइन करोगे तो तुम अगर ड्रॉ करके ये नहीं दिखाओगे कि देखिए क्लाइंट को नहीं दिखाओगे कि मैं ऐसे डिजाइन की हूं तो वो कैसे समझेगा. तो हमको ये ड्रॉ करना है. इंजीनियरिंग का भाषा ही है ड्रॉ करना, ड्रॉ करके ही समझाना पड़ेगा. ओके, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग अ लैप जॉइंट. ओके, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम अप टू दैट अंडरस्टैंडिंग? No, ma'am. Okay, very good. Okay, so just let me take your name one by one, then you can leave this session. Okay, so Okay, ma'am. okay. So first, just let me close the presentation. I will continue the rest part, means the single butt joint, double covered butt joint in the next class. Okay. Okay. So